Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Learn Account. Like always, without wasting any time, let's quickly get into the video. In the previous video, I have solved a problem based on underwriting of shares, and in this video, I'm going to solve one more problem based on underwriting of shares. So here's the question. Let me read the question first. X and Company Limited issued 50,000 equity shares of rupees 10 each. The whole of the issue was underwritten as follows. A 40% shares, B 30% shares, C 30% shares. The applications received by the company were for 40,000 shares in all, out of which the applications for 10,000 shares had the stamp of A, those for 5,000 shares that of B, and 10,000 shares that of C. Determine the liability of each underwriter. So this is the question, and first of all we'll try to analyze the question, then we'll solve the problem. सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देयर इज़ अ कंपनी एक्स एंड कंपनी लिमिटेड जो 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक के लिए, एंड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10 ईच. ओके, एंड देर आर 3 पीपल नेमली ए, बी एंड सी हु आर अंडरटेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलिंग दीज शेयर्स टू द पब्लिक. ओके, और उन्होंने परसेंटेज वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. एज यू कैन सी हियर, मिस्टर ए ने 40% शेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और मिस्टर बी ने 30% शेयर्स और मिस्टर सी 30% शेयर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कंपनी ने टोटल 40,000 एप्लीकेशन रिसीव किए और इस 40,000 एप्लीकेशन में 10,000 एप्लीकेशन मिस्टर ए का मार्क्ड एप्लीकेशन था और 5,000 एप्लीकेशन मिस्टर बी के मार्क्ड एप्लीकेशन थे और मिस्टर सी का 10,000 मार्क्ड एप्लीकेशन था. ओके, एंड द फाइनल सेंटेंस इज डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर. एज यू कैन सी, यहाँ पे अनमार्क्ड एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना होगा, नंबर ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन को फाइंड आउट करना होगा. ओके, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे हम क्वेश्चन रीड करेंगे, अगर क्वेश्चन में अनमार्क्ड एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड की गई हो तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना होगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशंस. ओके, एज यू कैन सी हियर, पर्टिकुलर्स अमाउंट. Total number of applications received by the company were 40,000 applications and उसमें हमको क्या करना होगा, लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस. मार्क्ड एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको यहाँ पे लेस करेंगे. ओके, मिस्टर ए का कितना मार्क्ड एप्लीकेशन था, 10,000 एप्लीकेशंस, मिस्टर बी का 5,000 एप्लीकेशंस और मिस्टर सी का 10,000 एप्लीकेशंस. टोटल 25,000 वर मार्क्ड एप्लीकेशंस. तो सिंपली हम क्या करेंगे, 40,000 माइनस 25,000 विल गेट नंबर ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, दैट इज 15,000. सिंपल. सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर द वर्किंग नोट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशंस. ओके, आपको इतना अट्रैक्टिव ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल वर्किंग नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं. ये मैंने सिर्फ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको इतना अट्रैक्टिव बनाया हुआ है. अदरवाइज आप सिंपल वर्किंग नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन. ओके, बट इफ़ यू हैव लिमिटेड टाइम इन द एग्जामिनेशन तो आप ऐसा ड्रॉ करेंगे, अगर आपको ऐसा अच्छे से आप वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे तो आपका आंसर और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा. दैट्स इट. आफ्टर प्रिपेयरिंग वर्किंग नोट वी हैव टू गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटर्स लायबिलिटी. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में किया था, पर्टिकुलर्स ए, बी, सी एंड टोटल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक ग्रॉस लायबिलिटी, दैट इज कितना है ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, 4:3:3. अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि रेशियो कहाँ से आया, जबकि क्वेश्चन में तो कोई रेशियो नहीं दिया हुआ था. सो द आंसर इज, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, परसेंटेज दिया हुआ था कि मिस्टर ए ने 40% शेयर्स अंडर रिटर्न किया, मिस्टर बी ने 30% और मिस्टर सी ने 30%, इजंट इट. तो वहीं से हमको रेशियो भी फाइंड आउट करना है, विच मीन्स 40% इन द सेंस 4, 30% मीन्स 3 एंड 30% मीन्स 3. सो द रेशियो इज 4:3:3. दिस इज द नेट लायबिलिटी रेशियो. ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रॉस लायबिलिटी 4:3:3 और ब्रैकेट में लिखेंगे शेयर्स अंडर रिटर्न. ओके, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 50,000 शेयर्स, विच मीन्स 50,000 इंटू व्हाट इज द नेट लायबिलिटी रेशियो, 4:3:3, विच मीन्स 4 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, 4 + 3 is 7, 7 + 3 10, 4 डिवाइडेड बाय 10. 20,000 फॉर मिस्टर ए. ओके, 50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, 15,000 for Mr. B, and the remaining shares, that is 15,000 shares, were undertaken by Mr. C.
total 50,000 shares were there which were undertaken by these underwriters. Simple. Next we have to take less unmarked applications. Okay, unmarked applications kitna tha? As you can see here, unmarked applications were 15,000 applications. Okay, as I told you in the first video, the benefit of unmarked application will be distributed among all the underwriters. Total number of unmarked applications 15,000. Okay, into what is the ratio? 4:3:3, which means 15,000 into 4 divided by 10. 6,000 applications will be given to the Mr. A, and 15,000 into 3 divided by 10. 4,500 applications will be given to the Mr. B, and the remaining application, which are 4,500, okay, that will be given to the Mr. C. Total 15,000 applications. Simple. Now 20,000 minus 6,000, 14,000. 15,000 minus 4,500, 10,500. 15,000 minus 4,500, the remaining application 10,500. Total 35,000. Simple. Next हमको क्या लेना है? Less marked applications. As you can see here, marked application already question में दिया हुआ था. Mr. A 10,000, Mr. B 5,000, Mr. C 10,000, isn't it? So हम क्या करेंगे? उस marked applications को यहाँ पे लिखेंगे. Less marked applications 10,000, 5,000, 10,000. Okay. Total 25,000 applications, marked applications. Now we'll get the net liability of each underwriter. That is 14,000 minus 10,000. 4,000 is the net liability of Mr. A. 10,500 minus 5,000. So the net liability of Mr. B is 5,500. 10,500 minus 10,000. 500 applications are the net liability of Mr. C. Okay. Simple, right? So this is how we have to find out the net liability of each underwriters. Net liability in the sense Mr. A, Mr. B और Mr. C को इतने shares purchase करने होंगे from X and Company Limited, because they have given guarantee to the X and Company Limited that in case of non-subscription, don't worry, whatever number of shares will remain, we'll purchase those shares. So that is why they have to fulfill their promise and they have to purchase these number of shares from X and Company Limited. Simple. With this, I would like to end the video. Bye and take care.